जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत सोनिया मेहता आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। ओवर टू यू सोनिया आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतर आत्मा से शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आंटी। सोनिया आंटी, हम सब गुरु परिवार बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी, हम सब बहुत बेकरारी से आपका सत्संग सुनने के लिए उत्सुक हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक शुक्राना गुरु जी का वचन है आज के सत्संग का, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट में उसकी जरा व्याख्या कर दीजिए प्लीज। जरूर। आज का शुक्राना गुरु जी वचन। गुरु जी कहा करते थे कि हमें दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं देखनी चाहिए। जी अंकल, गुरु जी कहते सी कि उसके बाद में आप सत्संग शुरू करिए अपना प्लीज। ओके, श्योर अंकल। एक्चुअली गुरु जी कहते सी दिस इज ट्रू कि नेगेटिव कहते सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 네ਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। This is what Guruji used to say. And in fact, he stopped one auntie from like वो ज़्यादा ना things like Crime Patrol ऐसे serial देखते थे, and he said नहीं, negative चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। I think Guruji इसलिए कहते थे because you know it impacts physically, emotionally आपको impact करता है. Moreover, it lowers your immunity. You know, when you're distressed, because negative चीजें always cause distress and it plays on your mind. And you know, ये चीजें जिसमें murder है, कलेश है, ऐसी चीजें definitely somewhere they play on your subconscious mind. या वैसे भी you get involved in these things. So Guruji कहते थे कि stay away from negative things. And also because, you know, then it affects your mental well-being, your physical well-being, emotionally. So Guruji मतलब वो एक बड़े casually चीजें कह देते थे, but उसकी importance और उसकी implications और उसके consequences बहुत immense होते थे. So it's for us to just follow what Guruji says and try and grasp what he's trying. But if you sit in meditation and you ponder over what each vachan is, and you will immediately know what is the meaning, what is the impact, implication of it, and what Guruji wants his Sangat to do. You see, we as Sangat must do what Guruji wanted us to do. So he always advised. Folk songs भी जब गुरुजी प्ले करते थे पंजाबी बड़े पेपी होते थे. So Guruji always said कि stay away at the end चीज़ा कोलों negativity होंदी है. This very clearly Guruji had said. I think जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने एक्सप्लेन किए हैं, very beautifully narrated. Please proceed with your session. Thank you. Sure, Uncle. Jai Guruji. Shukrana Guruji. I hope Guruji जो भी आपने कहलवाना है, प्लीज मेरे थ्रू मैं जो भी कह रही हूँ आपकी आज्ञा से गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, once again. This year in July मेरी सर्जरी हुई थी. गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने रूटीन टेस्ट में ही कुछ डिटेक्ट करा दिया था इन द गॉल ब्लैडर. एक्चुअली 5 साल पहले मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था. सो विद दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री, वो भी एक बहुत पावरफुल अमेजिंग सत्संग है. सम अदर टाइम आई विल टच अपॉन इट.
So since then, every 6 months routine test hote hain, and in one of the routine tests this year, in June, this lesion was detected in gallbladder. So past history ki wajah se my doctors got alerted ekdam ke nahi, whatever this is, and my surgeon was very clear, no, we have to remove this, remove the gallbladder. He doesn't mince his words. He said, no, we have to just go ahead and do that. So and rightly so, right decision, because baad mein, as the biopsy revealed, it was we just got it right on time. Before, agar malignancy ho jati, to fir it would have been a very serious situation. And बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, end time में detect कर दिया. And so संगत जी, गुरुजी is so loving, so kind, इतना स्नेह करते हैं, and if I can say so, लाड करते हैं, और हर वक्त अपनी presence feel कराते हैं. He's with his संगत all the time, and he really loves his संगत. जब मैं OT में थी, so anesthetist came and वो मेरी file पढ़ रहे थे, and I was obviously on the OT table. So he just looks at me and says, "Acha, आपका full blown cardiac surgery हुई है because of thrombosis?" I said, "Yes." He said, "My goodness, in 20 years I've not seen a case like this. Theoretically पढ़ा है, but practically नहीं देखा." And then कहते कहते वो मेरे left side से पीछे की तरफ आते हैं, and I think that he's gone behind me, because that just then I felt a very soft hand, like a child's hand, very soft, but an adult hand on my forehead, going all the way back to the center of my head, all the way back there. जैसे सिर हाथ फेरते हैं ना, मतलब सिर पे, माथे से लेके सिर पे हाथ फेरते हैं, बड़े जैसे करते हैं, वैसे saying, "God bless you, God bless you." For a second I thought, sounds like doctor but not sound, and he's a youngster, younger than me, in the 40s. So why is he saying God bless you? So then immediately it's Guruji, and usi waqt I saw the doctor walking from the left side, and there were all windows there, so apparently he was somewhere at the other corner and not behind me, coming again towards my feet, that side. And then for some reason he says, "Acha," he said something, "Acha main ye karte," kehte hue he came onto the right side, and again I felt as if he's gone, like, out of my side vision. So again I felt the hand saying same action and saying, "God bless you, God bless you." And immediate, and because by the corner of my eye I saw doctor was talking to the surgeon. So Guruji immediately validated, and even the tiniest doubt that I had, that he's there and Guruji is there, it was Guruji. And बहुत बहुत शुक्राना Guruji. And Guruji is, that's what, with you all the time, every time. वो जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो बस लिटरली हाथों पर उठाकर हर स्थिति, हर सिचुएशन से आपको निकाल देते हैं. मुझे गुरुजी के बारे में मेरी क्लोज फ्रेंड ने, वो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है एंड वेरी डिवोटेड सेवादार, इनफैक्ट हर होल फैमिली, ने बताया था. उसी वक्त that time only, जब वो बता रही थी गुरुजी के बारे में, छोटा सा सत्संग करा था, उसी वक्त I felt एक pull, एक खिंचाव, an intense desire to meet, to have darshan of Guruji, to meet Guruji. And that happened in mid 2005, mid Feb 2005. I had to go to Delhi. And my mother was very unwell. She was hospitalized. She had some water in the lungs, and फिर उनका angio हुआ, pacemaker लगा, and pacemaker body ने accept नहीं करा, so उसको निकालना पड़ा. So she literally went through a lot
She was admitted in RR Hospital, Research and Referral Hospital, Army Hospital. So, and गुरुजी कहते थे कि जब मेरे बारे में कोई आप सोचते ही हैं, मन में ख्याल ही आता है गुरुजी के बारे में, आपकी जर्नी उस वक्त से शुरू हो जाती है. फ्रॉम दैट टाइम इन दिस लाइफ टाइम, हम कब से जुड़े हैं, किस लाइफ टाइम से जुड़े हैं, उनका हाथ हमारे सिर पे कब से है, ये गुरुजी ही जानते हैं. But in this lifetime, the minute you think of Guruji and you feel, उनका ख्याल ही आ जाए, सोचना कि मैं अब जाऊंगी गुरुजी से मेरे और सत्संग अटेंड करूं, वो तो बाद की बात है. Even then your journey starts. So गुरुजी के पास मैं 12th March 2005 में गई थी. Actually शिवरात्रि 7th March को थी उस साल. एंड और मैं पता नहीं क्यों, बड़े मंदिर में होते हैं शिवरात्रि, और फंक्शंस जो मेन होते थे बड़े मंदिर में होते थे. वैसे गुरुजी ऑफ कोर्स एम्पायर स्टेट में उनका दरबार होता था, गुरुजी वहीं रहते भी थे. पता नहीं, मैं ना उस जाने से झिझक गई उस दिन 7th March को 2005, क्योंकि मुझे था कि गुरुजी लेट तक बिठाते हैं और बहुत लेट हो जाएगा. एंड मम्मी अभी हॉस्पिटल से आई थी, वीक थी, ऐसे वो टेंशन में परेशान हो जाएंगी. और उन दिनों में वो थोड़ा सा सुनसान एरिया भी था, और दिल्ली का माहौल भी इतना अच्छा नहीं था. सो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड नॉट टू अटेंड. एंड बट अब मुझे कोई कहे कितना भी लेट हो, मैं तो बेखौफ आ जाऊं, बिकॉज मुझे पता है अब कि गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं अपनी संगत नू तोड़ तक छड़न जांदा, which is very true. There is a satsang, but I'll not tell na some other time because फिर बहुत लंबा हो जाएगा. And but the thing is कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं वो अपनी संगत के साथ. नॉट ओनली कि आप अटेंड कर रहे हैं, वो मेक श्योर. तभी वो कहते थे कि ब्लेसिंग्स लेके सीधा अपने घर जाओ, बीच में नहीं रुको, बिकॉज गुरुजी आपको तोड़ तक छटन जानते हैं. ही टेक्स केयर ऑफ हिज सत्संग संगत, लव्स हिज संगत, स्पेशली संगत. आपके भाव अच्छे होने चाहिए. गुरुजी तो कहते हैं भाव के जैसे भूखे होते हैं ना, आपके भाव अच्छे हो, नीयत अच्छी हो, बस दैट इज इम्पोर्टेंट. गुरुजी हमेशा कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, और हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखा देते थे. उनकी बहुत बातें ना, ऐसे कई बातें आपको बहुत बाद में समझ आती हैं, बट I will share something for what I have said just now, practical guru, but maybe a little later. And 2005 में ये सब नहीं पता था, so I did not go on 7th March and then I went 12th March. मैं गई थी, मेरी भाभी भी मेरे साथ थी, and went to Empire State. हम around 6:30 पहुंचे थे Empire State. और मैंने एक्चुअली कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, तो जैसे ही एंटर करा ना, वहां एक बड़ा सा स्वरूप था. I mean पेंटिंग सी थी गुरुजी की. तो एक आंटी खड़ी थी, मैंने बड़ी सॉफ्टली उनसे पूछा ये गुरुजी हैं? कहते हाँ. और सामने आगे साइड बोर्ड पे जिनकी वो बड़ी सी पेंटिंग थी, वो वहां बैठे हुए थे साइड बोर्ड के ऊपर. तो कहते हाँ यही हैं. So I was not expecting like this, but ठीक है, वो casual उसमें बैठे हुए थे, so casually. So and I stepped forward, and जैसे ही मैंने वो एक step है, आपको एक step down लेना पड़ता है, and then you go straight. तो kitchen है, sideboard है, अगर आप right turn कर गए तो फिर दरबार हो, गुरुजी की गद्दी और वो सब है. So as I took that one step down, at that time गुरुजी turned and looked at me, and that instant
that moment, I don't know, मैंने तो कुछ नहीं कहा, शायद मेरी रूह ने बात करी. I felt that instant, you know, I just felt I've come home. मुझे, मैं अभी गुरुजी से मिली भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है. All I knew, he had tremendous healing power, hardly बोलते हैं, और अगर किसी के बारे में आपने पूछना है तो उनकी फोटो लेके जाइए. That's all I knew, nothing else. But that feeling was so intense. I've come home. And it was, just had a sense that Guruji हैं, बस महापुरुष हैं, and बस वो हैं, like, you know, he's there and that's it, and I've come home. मैं आगे गई, माथा टेका, और गुरुजी ने पूछा की ना है, किथों आई है, किन्ने दस्या है. मैंने बताया. फिर मेरी तरफ सीधा देख के कहते हैं, आंटी, emphasizing each word, and especially आंटी तेनू की चाहिए, emphasizing on the word tenu. So it was like asking me, like me, you know, as that. So I said, oh my gosh, that 2-3 seconds, hundreds of thoughts must have passed my mind. This was just buzzing. And I was feeling, you know, all thoughts, everything, क्या मांगे गुरुजी से, सब कुछ इतनी वर्ल्डली लग रही थी, इतनी दुनियावी बातें, इतनी, you know, just not big enough to, or special enough to ask Guruji. And I could see Guruji was looking straight at me, and I could feel that he can read my thoughts, and he can see I'm rejecting each one of them. And then finally, I just folded my hands and I said, Guruji, बस आपकी blessings चाहिए. And then Guruji gave me a very sweet smile, really a sweet smile, and said, जा जाके बैठ जा, लंगर खा के जाए. I said, हाँ जी गुरुजी. और मैं बैठ के, थोड़ी देर में गुरुजी उठ के अपने रूम में चले गए. And then of course, जब वो रूम से बाहर आए तो राजे महाराजे क्या आते होंगे, क्या स्टाइल में, क्या ऑरा, so mesmerizing, so mesmerizing. राके गद्दी में पर बैठे और शब्द चल पड़े. अब मेरे मन में चल रहा था कि मुझे तो गुरुजी को बताना है. मैंने मम्मी की बात तो करी नहीं, जिसके पीछे मैं गई थी, मैं करी नहीं. वैसे ही मिलना था, वो अलग है, जो खिंचाव आ रहा था from 2004 when I was told. But this, by now there was a specific thing that I had to ask, and no, I didn't know how, whether I should get up or not. और मैं जरा हरकत करूं, I used to feel कि, you know, somehow I knew कि नहीं, अभी नहीं उठना है. वो शब्द जब stop हो गए, and I saw Guruji looking at me, and I stood up. It's very strange. संगत आगे बैठिए, साइड में बैठिए, पीछे बैठिए, but somehow when Guruji looks, you just know it's you, and nobody else gets up. आप ही उठते हैं. And I went up to Guruji, and he said, की गल है? तो I told him कि गुरुजी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब अब हॉस्पिटल आ गई हैं, बट हॉस्पिटल से घर आ गई हैं, बट बहुत वीक हैं. एंड तो कहने फोटो हैगी. मैं कहा हाँ जी, मैंने दी, और उन्होंने उस पे, now he tapped on that. It's few years down the line, it flashed in my head that Guruji had exactly, you know, कई बार ऐसे बातें होती है, उस वक्त आपको नहीं पता चलता, ये बाद में सडनली, और वो भी गुरुजी ही आपको वो थॉट या उसका आंसर या उसकी सिग्निफिकेंस बाद में समझाते हैं. बिकॉज ये फ्लैश आपको नहीं तो अपने से कैसे आएगा. इट केम एंड आई रियलाइज दैट गुरुजी ने अपनी 4 फिंगर से 5 बार फोटो पे टैप करा था. And my mother lived exactly 5 years from then. And I know Guruji extended her life. And वो बहुत हेल-हाटी, मतलब अच्छे से थी. And जब उन्होंने मेरे को फोटो वापस दी हाथ में,
तो फिर से कहा उन्होंने लंगर खा के जाएं और कल लोटा लेके आए। I said हाँ जी गुरुजी। एंड जैसे मैंने टर्न करा तब तक चटाइयां लग चुकी थी और सब संगत आमने सामने बैठी थी और जहां मैं बैठी हुई थी वो लाइन सब फुल थी। सो मुझे जगह मिली लिटरली गुरुजी के पैरों के पास, बट फेसिंग गुरुजी। सो मैंने जब लंगर खा रही थी एंड यू नो आई कुड फील कि गुरुजी इज लुकिंग एट मी। मैं ऊपर देखूं तो लगे कि गुरुजी देख रहे हो। मैं फटाफट नीचे आकर के आई हैड फिनिश लंगर, अपना लंगर प्रसाद लिया, हाथ पर धो के आज्ञा लेने जब आए तो गुरुजी ने मेरे से पूछा लंगर खादा है? I said हाँ जी गुरुजी। एंड आई टर्न्ड और उन्होंने मतलब आज्ञा दी तो आई टर्न्ड एंड वंडरिंग कि गुरुजी ने फिर पूछा, उनके सामने तो मैं खा रही थी। लेटर आई रियलाइज्ड कि महापुरुष एक बात 3 बार कहते हैं because he's emphasizing a point। और वो तो जानी जान है, उनको तो सब पता है लंगर खाया नहीं खाया। उनको तो ये भी पता है कि बाहर क्या हो रहा है, beyond the walls। I mean, forget about what's happening in front of him। But the fact that he said this, he gave so much importance to Langar Prasad। It was a message not for me, that realization not for me, but for everybody, the Sangat। And when I returned, also I mentioned to Aunty that Guruji was emphasizing a lot on this. And so next day, I went again with my bhabhi with the lota। So जब आज्ञा लेने का टाइम था तब मैंने गुरुजी को लोटा दिया, उन्होंने ब्लेस करा और मेरी तरफ हाथ करा लोटा देने के लिए। बट फिर मेरे को कहते हैं तू दिए एनू है, तो हाथ पीछे कर लिया और मेरी भाभी की तरफ आगे हाथ करा लोटा देने के लिए। बट देख वो मेरी तरफ ही रहे थे intensely, directly। And that time I heard clearly in my head, as if somebody has come and said loudly in my ears। I just heard it so clearly in my head, tu piche ho ja, enu aage aan de। That was my first telepathic experience directly with Guruji। और उन्होंने रिश्ते की नींव जो उस वक्त रखी, the foundation that he laid, the equation that he balanced was so significant। And because Guruji knew कि आगे कितना important role इन्होंने play करना है मेरी life में, as has the life unfolded, you know, later on। So and that by that point my bhabhi had already, you know, took the lota and she had turned, and Guruji asked me kadon ja rahi hai? I said pata nahi Guruji, shayad next week। फिर ना स्माइल करके मेरी तरफ कहते हैं आंधी रहा कर। I said हाँ जी Guruji। And I felt so nice, I felt so nice of him to say that, you know, like casually। It's much later I came to know that this sentence meant कि गुरुजी ने आपको admission दे दी है। I felt so happy that the very next day that I was with Guruji, he said this to me and given this beautiful, beautiful blessing। So since that first time when I had darshan of Guruji, my desire थी, ख्वाहिश थी कि next time I go, my uncle should be with me। wanted him to also get Guruji's blessings। So beginning 2006, I went with uncle to Guruji's darbar। And आज्ञा लेने के वक्त जब मैंने माथा टेका ना, तो I told Guruji कि गुरुजी मैं last year आई थी और मम्मी की तबीयत तब ठीक नहीं थी और आपने लोटा ब्लेस करके दिया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट 2 हफ्ते वो मसूरी भी घुमाई है with my brother's family। She's very hale and hearty and fine। Thank you Guruji। मैंने उनकी तरफ देख के कहा thank you Guruji। Guruji immediately, almost, I don't know, he blushed
kind of, he gave such a sweet, shy smile, and he kind of, you know, tilted his head, sort of lowered his head, as if, you know, he's happy, yet he's very shy, like a little boy. And it's my very precious, cherished memory. Later I came to know, much later, Guruji used to say कि मैंने कोई thank you ही नहीं करदा. And this makes me so happy to know, and really gives me so much of peace, sukoon, to know that I did something that Guruji expected from his Sangat. Something that, you know, he felt his Sangat should also do for him, because of course the Guruji karte hain, but there are very little things that we can do for him. So really, it's a very precious, very cherished memory, beautiful memory. Also that day I told Guruji कि Guruji मेरी बेटी का रोका हो गया है. तो गुरुजी ने एक दो सवाल पूछे, फिर कहने कर दो ब्याह. So that was again another thing where I was very relieved to get Guruji's approval. उतनी देर में अंकल आ गए और मैंने कहा गुरुजी ये मेरे अंकल हैं, एंड गुरुजी ने कहा बैठ जाओ, और बिल्कुल अपनी गद्दी के साथ ना, बिल्कुल उसके साथ उनको बिठा दी, और फिर टर्न करके ना पूछा कि ना, that much I could hear, and then ओ किथे, गुरुजी को तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत थोड़ी ना, बैकग्राउंड ये वो सब पता है, because uncle is also from Jalandhar, and ओ किथे, and Jalandhar's been my father-in-law's constituency up to till he became the CM. So वो मतलब इतनी ठेठ पंजाबी में बोल रहे थे. इनफैक्ट गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे और बड़ी फास्ट बोलते थे. सो कई बार ना, it was difficult to keep track. But क्या gist of the conversation, क्या conversation I could make out from what my uncle was saying. तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा था. और so, and you know, I think from that day, first meeting से मतलब अंकल तो बिल्कुल ही जुड़ गए गुरुजी से. मैं तो थी, and uncle also. So it was very nice. Shukrana Guruji for your benevolence, I'll say. Really. Thank you, Guruji. Significantly, 23rd April 2007, हम गुरुजी के दरबार में थे, और फिर वही आज्ञा के टाइम गुरुजी ने कहा बैठ जाओ. तो तब मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी शादी दी डेट फिक्स हो गई है 3 जून, तुसी जरूर आना गुरुजी. एंड हाथ जोड़ के जिस तरह होंदा, प्लीज गुरुजी तुसी आना. ते गुरुजी कहने मैं नहीं होवांगा. आई थॉट गुरुजी पंजाब जा रहे हैं या कुछ. तो आई सेड गुरुजी 1-2 दिन आगे पीछे कर लो, बट प्लीज तुसी जरूर आओ. एंड कहने मेरी तरफ देख के ना, कहने नहीं, उन्होंने कहा ए हो नहीं सकता. फिर मुझे लगा कि मैं उनके सामने थी, ऐसे हाथ जोड़ के ऑन माय नीज काइंड ऑफ. मुझे लगा गुरुजी सीरियस से हो गए. तो मैंने ऊपर देखा, और गुरुजी फिर मेरी तरफ ना बड़ी, मतलब जैसे डायरेक्टली देख के कहते, एंड इन वेरी स्लो, लाइक एम्फसाइजिंग ईच वर्ड, डेट ना चेंज करी. फिर उन्होंने कहा डेट ना चेंज करी. Even then, that time also I realized कि मेरे को कुछ significant चीज कह रहे हैं, important कह रहे हैं. I said हाँ जी गुरुजी. And then I said गुरुजी अगले महीने कार्ड रेडी हो जाएंगे, मैं बिगनिंग पे I'll come and give you. तो उन्होंने सिर हिला के कहना कोई लोड़ नहीं, 10 देता, डेट ना चेंज करी. I said हाँ जी गुरुजी. फिर हम वहां बैठे हुए थे दरबार में. दोबारा हलवा प्रसाद आया, गुरुजी ने अपने हाथ से अंकल को दिया, और सिंगला अंकल वहां थे. फिर उन्होंने बाकी सबको हलवा प्रसाद दिया था, बट अंकल, मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था. एंड थोड़ी देर, कुछ मुझे लगा थोड़ी देर बाद, बट एक्चुअली तब अंकल सेड के गुरुजी कह रहे हैं आगे झुंड जाओ सब. तो अभी से ही, वो अभी से ही नहीं था, तो सब 2:45 बज गए थे, ऑलमोस्ट 3 AM. ऐसे ही लग रहा था कि बस. तो आई लुक्ड एट गुरुजी, तो उन्होंने ना सिर हल्का सा हिलाया, जिस तरह होना ना कि हुन ठीक है जाओ.
and उनका हुक्म था, तो माथा टेका, उठे और and we were going again. I was on that step, one step that I was saying कि वो बाहर जाने के लिए या अंदर आने के वो है. एक अंकल 2 कदम आगे थे towards the main door. मैं उस step पे खड़ी थी, and I don't know what came over me, and I looked towards my left. Just then, Guruji walked अपनी गद्दी से diagonally towards, he was walking towards his room. As he passed, Guruji turned his head and looked at me, straight at me. At that moment, it's like an electric moment. That's the best way I can describe it. Not easy, sometimes words fail you, but that moment was something, it was an electric moment. I think, I'm convinced that my soul spoke to Guruji, and I know that moment Guruji held my hand, and आज तक उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, and he has smoothly taken me through however life unfolded thereafter. That moment is etched in my soul, in my heart. I think in my soul, I might take it in my next life along with me. It's so, I only came to know on 7th June what had happened on 31st May. It was shattering. It was really shattering. ऐसा नहीं था कि हम मंत्र जाप करते थे या कुछ, बट एक बहुत एहसास था गुरुजी हैं, बस गुरुजी हैं, that feeling was there. And but then something wonderful happened in September 2008. So where I was staying in the Middle East, Satsangs on Monday, excuse me, started. So, felt again a reconnect. So उन दिनों में बहुत fragrance आती थी, divine presence गुरुजी की बहुत feel होती थी, dream darshan, and amazing experiences होते थे. So it was very special, and वैसे ही फिर लगा कि reconnect हो रहा है. So it was really something very special. Thank you, Guru. Shukrana, Guruji. 2000 July, end of 2000 July, my uncle en route to shipyard from Busan in Korea, going to the shipyard, met with a fatal accident. And at that point of time, we were all in different countries. My son was in the Middle East. My daughter was in USA. I was in Delhi because basically both my uncle and I had come just 3 days prior to attend a friend's daughter's wedding. And he left for Korea, and the next day I was going back to where I was staying. So, and then August second week, beginning second week, we returned, and children were with me after the last rites and all that. We returned, and because signatures of children were needed, my son, of course, was with me, and my daughter had to go back. Daughter and son-in-law had to go back to USA, and so, we all handle grief differently. But from third week to last Sunday, I think, last Monday, or maybe the third, in August itself, I started attending Satsangs on Monday. और कहाँ जाओगे? दुख में, सुख में, गुरुजी के पास ही जाओगे ना? बिकॉज़ आपको स्ट्रेंथ वहीं से मिलेगी, सोलस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, आपके वुंड्स हील होंगे. So it is Guruji, always. October 2009, same year,
Sometimes auntie, my friend, used to call me once or twice. She called me कि आ जाओ, phone करते हैं, सत्संग सुनते हैं. So एक दो बार मैं गई थी and we had heard some satsangs. But that particular day, auntie ने कहा चलो आज भी सत्संग सुनते हैं, आ जाओ. I went and I think that was her way to keep me more engaged. And नहीं तो हम आपस में मिलने आएंगी तो हम क्या बातें करेंगे ना ऐसे. So उन्होंने 3 फोन कॉल करे, किसी ने नहीं उठाया. 4th कॉल करी रमा आंटी को, उन्होंने उठा लिया फोन और उन्होंने, आंटी ने कहा तो सत्संग करी, उन्होंने 10 मिनट सत्संग करा, 20-25 मिनट सत्संग करा और फोन रख दिया. फिर आंटी ने कहा कि अच्छा किशोरी अंकल को करते हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया. So we had made 5 calls and then auntie said कि चलो आज ना मास्टर जी को फोन करते हैं, हिमाचल प्रदेश में वो कम ही उठाते हैं पर ट्राई करते हैं. 2 रिंग में उन्होंने फोन उठा लिया और सीधा कहते हैं इत्थे उत्थे फोन करन दी कोई लोड़ नहीं है, मंत्र जाप किता करो, 5 फोन कॉल कर चुके हो, की लोड़ है इत्थे उत्थे फोन करन दी, मंत्र जाप किता करो. एंड फोन रख दी. आंटी कुछ तो समझ गई. देखा इनको कैसे पता हमने 5 फोन कॉल करे. आंटी ने फिर उनको फोन करा, उन्होंने उठा लिया. तो आंटी ने कहा अंकल आपको कैसे पता हमने 5 फोन कॉल करे. तो उन्होंने कहा हेडक्वार्टर है, मंत्र जाप कितना करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय. एंड फोन रख दिया उन्होंने. आंटी immediately understood because the voice and what was said. कहती गुरुजी अपने आप से थोड़ी ना कहेंगे ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय. संगत जी, that message was not for both of us, it was for everybody. The importance of मंत्र जाप. सत्संग सुनिए, जरूर सुनिए, आंसर्स मिलते हैं, बट मंत्र जाप इज प्रायोरिटी नंबर 1. इससे ज्यादा वैलिडेशन, इससे ज्यादा एम्फेसिस और कहाँ कैसे होगा. आई मीन इट सेज इट ऑल. कहाँ से ये आया है दिस हुक्म, आदेश, and we have to follow it. Mantra jap is the most important thing. 15 Jan 2010, it was my anniversary. Auntie, my friend, she called me and said, when I say auntie, I mean जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था. Auntie called me and said घर पे है. मैंने कहा अच्छा I'm coming. Then 5 minutes later she calls and says, why don't you come? You come here, park your car, and फिर मेरी गाड़ी में हम लोग जाएंगे, गुरुजी का कुछ काम है. I said okay, sure, I'll come. And वैसे भी I thought what better way. I was feeling a little low that day, obviously first anniversary after that, and so I said sure I'll come. And what better way to spend the day than doing Guruji's seva. So हम गए and actually उन्होंने कुछ स्वरूप गुरुजी के फ्रेम कराने थे और जो बड़ा स्वरूप था उसका भी फ्रेम चेंज करना था. So we went, we reached. आंटी अपना एक्सप्लेन कर रही थी, सिलेक्ट कर रही थी, और मेरी नजर एक फ्रेम पे पड़ी जो कोने में पड़ा था, जहाँ पे कस्टमर्स के रेडी फ्रेम जो पड़े ना वहां पड़ा था, पीछे करके ब्यूटीफुल गोल्डन फ्रेम, स्मॉल रेक्टेंगुलर थिंग. एंड आई वेंट नियर इट, उस धूल सी पड़ी हुई थी. I went near it and through that then I could see GU ऐसे कुछ लिखा हुआ. And I realized ये तो गुरुजी लिखा हुआ है. So I called auntie and I, तब तक इतनी संगत ऐसे नहीं जुड़ी हुई थी, और अगर उन्होंने फ्रेम करने भी दिया होगा तो स्वरूप दिया होगा, not like something if it wasn't, it was just some lines written about गुरुजी. तो I said आपने क्यों फ्रेम कराया? कहती नहीं. तो हमने निकलवाया, उसको साफ करवाया. कहती नहीं मैंने तो नहीं दिया. ये किसी पूछा उससे कि कौन देके गया? कहते जी पता नहीं, मैं तो अभी हफ्ता पहले आया हूँ,
ये जो भी देखे गए पहले जो था बंदा वो दूसरी ब्रांच चला गया, उसको पता होगा, तो उधर फोन करा, उससे पूछा, कहते जी 3 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते पहले कोई आए थे ओपन जीप में, टॉल फेयर, डिशडाशा पहना हुआ था, अरबिक ड्रेस, पर सिर पे नहीं कुछ पहना होता है, बॉल्ड, एंड वो दे गए थे, कहते हैं मैं 1-2 दिन में आके ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने उनका कोई एड्रेस या फोन नंबर नोट करा होगा? कहते नहीं जी, वो जल्दी देके चले गए, मैंने नहीं कुछ नोट करा। नॉर्मली विद द प्रैक्टिस ना, कि भाई आप करते हो फोन नंबर एंड ऑल दैट कस्टमर का। कहते नहीं, और उसके बाद कोई आया ही नहीं। सो देन आंटी सेड अच्छा ठीक है, हम इसको ले जा रहे हैं, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लो, एंड अगर कोई, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे स्वरूप, ऐसे गुरुजी की कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे, धूल मिट्टी पड़ रही है, उनका फोन आए तो उनको बोलना मैं यहाँ से कलेक्ट कर लें, या मुझे बता दें, मैं वहां उनके यहाँ पहुंचा दूंगी। बिकॉज जो भी स्वरूप होता है गुरुजी का, हम कभी मतलब ऐसे शॉप में छोड़ के नहीं आते, उनको जो भी 1-2 घंटा 2.5 घंटे जो भी लगते हैं फ्रेम करने के लिए, फ्रेम करा के लेके आते हैं। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट आप छोड़ दो और कल लेके, नो, वी डोंट लीव इट, उसी वक्त लेके आते हैं, उस नेक्स्ट 2-3 आवर्स जो भी टाइम लगता है, बट वी ब्रिंग इट बैक। सो दैट एंड so when we reached home, और मैं ही लेके पकड़ के लेके आई थी, and we reached home and to her place, and I kept it in her darbar, Guruji's darbar, and had chai prasad, and I was leaving. As I got in the car, she came. She said, "No, you spotted it, you brought it home, you carried it home. I think it should be with you." So I was very happy. I just I went, got it, brought home. In fact, I kept that frame thing on the passenger seat and put the seat belt, covered it with my dupatta, and that's how I. So it's there in my darbar, this beautiful, beautiful blessing Guruji gave me. Thank you, Guruji. And Guruji does this, because the positivity that it brought in me, and that fact it made me feel so light. Next day, 16th, I decided to go to Delhi because I'd never gone back after August, and my mother had felt some murmur in her heart, and she had gone for checkup, and because of protocol and age thing, so they admitted her for observation for 2 days. So I said, Chalo, I'll go and meet her. And I called my brother and said, I'm coming. He said, why? She's going to get discharged. I said, no, I just want to come. My idea was I'll go just for 2 days, meet her, spend time with her, and then come back and then start doing my other thing, because मैं वापस नहीं गई थी, so much paperwork to be done when sudden unfortunate incident happens, and as my uncle passed away, and being NRIs, we have so many bank accounts of properties, everything in India, so वो सब करना, name change, ये वो सब start ही नहीं करा था, ऐसे बाद में जाऊंगी, and I don't want mommy to feel that I've come because work related, let me go and just meet her. So I went the next day, and that same night I took the flight. 17th I reached. We were still in the plane when my brother called and said, where are you? And because he told me call and check कि हम hospital में हैं कि घर आ गए हैं, but he called me and I said, you're still in the plane on the tarmac. So he said, come quickly to RR, mommy is no more. So anyway, I reached, and so all this what happened, that positivity, sometimes all these blessings or ये जो लीला गुरुजी रचते हैं, it's to give you, to strengthen you, to face what's going to come, and it really makes you face everything, and I think that's what helped me to get through all that trauma and everything. And on 24th Jan, because back to back ho gaya tha within 5 months of my uncle passing away and then my mother, so by the time I went to Bade Mandir for the first time on 24th January, that same month, when I went and I entered, I was like feeling the burden of everything, as if I'm holding the roof, figuratively, not literally, but holding the roof, and head of the family ki topi pehna di mere ko, but I'm holding the roof and all the other pillars are falling. Guruji,
my uncle, mummy, and with that sort of feeling and that sort of heaviness, I entered the gate of Bade Mandir. And the minute I stepped into Bade Mandir, I just felt peace descend on me. I just took one step in from the gate and I just felt peace descend on me. And I just felt that Guruji ne jaise upar se na pakad liya hai, is jaise chhat ko pakad liya hai, and I can put my hands down and I can relax, and Guruji ne tab se Guruji ne hi pakda hua hai. And Guruji ne matlab, I felt so, I felt so blessed to just be in Bade Mandir, to walk on the ground Guruji walked on, to do the parikarma. It's so special. I think just being in that ground itself is a huge, huge blessing. I think sometimes we take it very lightly. People go, idhar matha teka, udhar samadhi pe kara, Ganesh ji ka kara, samadhi kara, darbar pahunch ke. No, wo to darbar pahunch ke to bonus hai, very good. But even you've just entered, you're walking, it's a big thing, big, big blessing. And I've had so many blessings every time I've been to Bade Mandir till date. From that day to now, every time I felt there's been something special, and I am kind of feeling as if, jaise Guruji kehte na, haan teri hazri lag gayi, that kind of feeling. Always there's been a blessing. In 2010, actually between 2010 and 12, it was a very intense period. Make to mere chakkar bhi zyada lag rahe the, short trips to Delhi. And I had the divine darshans. One day I was coming back from Signature Towers back to Delhi, and I told the driver to go to Bade Mandir. It was a non-Sangat day. And I asked, जब भी बैठे हुए थे वहां पे, I asked कि मैं अंदर जाके परिक्रमा कर लूं, तो कहते आंटी संगत डे पे आओ ना. I said, अंकल जी मेरी फ्लाइट है रात की, तो मैं नहीं. तो कहते अच्छा ठीक, कितों आए हो? मैं बताया, कहते अच्छा ठीक है जाओ. So मैंने गणेश जी के माथा टेका, समाधि के, तब अखंड ज्योत ग्लास डोर्स के पीछे होती थी. आजकल मतलब बीच में उन्होंने बाहर कर दी थी, but now again due to corona and everything, it's inside behind the glass doors, the sliding glass doors of Samadhi. And मैंने वहां माथा टेका और जैसे ही ऊपर देखा ज्योत में, I clearly saw Guruji. And like a slideshow it happened, and so few seconds later Guru Nanak ji, and then few seconds later Sai Baba. I really thought I'm hallucinating. I got up, I did a parikarma, I came back, फिर मैंने माथा टेका, ज्योत में जैसे ऊपर देखा, I saw only Guruji. Shukrana Guruji. Another time, and another visit in 2011, I think. Yeah, 2011. I was in Delhi and I went. It was again happened to be a Tuesday and my flight was on Wednesday. So I went to Bade Mandir because those two are non-satsang days. So I went to Bade Mandir and Mali Bhaiya was sitting. So I asked Mali Bhaiya, मैं अंदर चक्कर मार के आ जाऊं? कहते आंटी Thursday आना. I said, अंकल जी मेरी तो फ्लाइट है कल. कहते अच्छा चलो जाओ. मैं पूरा परिक्रमा करके अपना उधर झूला की तरफ से सब करते हुए मेन गेट की तरफ बाहर आ रही थी, उधर से निकल के छोटे गेट से बाहर निकलने के लिए. माली भाई वो छोटे गेट ही खुला था, वो वहां बैठे थे. और आई एम थिंकिंग कि आज तो किसी ने रोका ही नहीं, कुछ सेवादार ने कुछ बोला ही नहीं. किचन से मैं निकली हूँ, वहां से आवाज भी नहीं आई कि आंटी प्रसाद लेते जाओ, कुछ भी नहीं हुआ. एंड आई एम कमिंग एंड पता नहीं आज जैसे कि हाजिरी ही नहीं लगी काइंड ऑफ. I came out and I went to the जोड़ा घर, वो बिल्कुल साथ में ही था. और and I saw with the corner of my eye some tall person standing wearing a gray safari suit sort of.
तो मैं अपने पहन के, कार भी पास ही खड़ी थी, वहां से मैं कार की तरफ चल रही थी. I heard some sound. Then again I felt somebody saying auntie. So I turned and I looked at this uncle and I realized वो मेरे को ही कह रहे हैं आंटी, और उनके हाथ में कुछ था. और उन दिनों में बहुत लोग होते, नॉट बहुत बट समटाइम्स कार पार्क में कई खड़े होते थे, लॉकेट दे रहे हैं या कुछ, या वो स्टिकर जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज. बट अभी सब बंद है, आपको एक ही पॉइंट से सब मिलता है. तब थोड़ा कुछ ऐसे था. सो आई थॉट मे बी उनके हाथ में कुछ है, वो कभी शायद वो देना चाह रहे हैं. तो आई सेड हाँ जी जय गुरु जी अंकल, और मैं पास गई. उन्होंने तो मुझे थे पंजाबी कदों दा खलोया, आख रहे हैं सुनदी नहीं है, कड़ी धूप विच खड़ा होया खलोया होया. जी अंकल, और उन्होंने ए फड़ो, उन्होंने मेरे हाथ में, जो उनके हाथ में था मेरे हाथ में दे दिया. और मैंने बस जय गुरु जी करा एंड आई टर्न्ड. A very handsome person, fair, pepper gray hair, Kashmiri, tall, उसके तरह लग रहे थे. Beautiful gray safaris. That kind of impression I had, and I हाथ में पकड़ के I turned, I took 2 steps and I thought to myself, मैंने thank you तो बोला ही नहीं. And I turned again. Not even 2 seconds भी नहीं हुए होंगे. I turned and there was nobody. I went running to माली भैया. I said वो जो खड़े थे उन्होंने, जिन्होंने मेरे को हाथ, जिनसे मैं बात कर रही थी, वो कहाँ गए? कहते आंटी कोई नहीं, आप तो सीधा जोड़ा घर गए. I said नहीं अंकल, ये देखिए मेरे हाथ में ये है. कहते नहीं कोई नहीं. I said अच्छा अंदर कोई गया? कहते नहीं. मैं बाहर पूरा वो स्ट्रीट देखी, कोई नहीं दिख रहा था मुझे. I said अच्छा मैं परिक्रमा कर, मैं पूरा करके आई, कोई नहीं. ऑफिस देखा ताला लगा हुआ. I said okay, thank you, शुक्राना गुरुजी. Even now it's I get goosebumps. Thank you, शुक्राना गुरुजी साक्षात दर्शन देने के लिए. एक बार मैं दरबार में थी, माथा टेक रही थी. सेवादार came to me and said, आंटी आप इधर आके बैठिए, the so-called VIP corner. I know I was about to say no, then I realized कि मैंने थोड़ी ना कोई जुगाड़ कर रहा है, सेटिंग कर, ये तो अपने से हो रहा है, गुरुजी की मर्जी से हो रहा है. So I went and sat. और थोड़ी देर बाद किसी ने आके मुझे बोला आंटी आप आइए, और एग्जिट डोर जो होता है पीछे के, उधर की तरफ ले गए. एंड while going he opened the door of Guruji's room and said आंटी आप इधर आके बैठिए. And I went in. संगत जी, I can't describe what it is. Jannat, Swarg, that feeling I can't describe in words. Thanda, immensely fragrant. और वहां गुरुजी की गद्दी, and I just, मैं माथा टेक रही हूँ. I'm totally overwhelmed, crying, just muttering मंत्र जाप, because मुझे शायद कुछ और समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. And I just sat and don't know कितनी देर मैं बैठी. I cannot describe in words कि वो क्या experience था. मैं कितनी देर बैठी, वो क्या था. I don't know whether I was in my senses or not. I have no idea. But that was something very, very special. You know, Guruji ki blessings flow hoti hai na, they're for reasons best known to Guruji. It's not for us to question why. Just go along. This big leela that Guruji jo karte hain, uska kya purpose hai, we have no idea. It's not for us to really question why. And one of the trips, मैं वही जा रही थी ऐसे परिक्रमा कर रही. That was a satsang day, but मैं morning में गई थी और परिक्रमा ऐसे कर रही थी. No, it was not a satsang day. I'm so sorry. It wasn't, and I was doing, and it was I think Wednesday morning, and करके मैं पीछे से आ रही थी. उन दिनों में अलाउ कर देते, रोक टोक नहीं थी, बिकॉज संगत भी थी इतनी नहीं थी. 2012 से तो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है ना, मतलब. एंड ऑब्वियसली फॉर sheer management reasons, security reasons, and discipline wise, they don't now stop, because otherwise very difficult to manage.
तो तब नहीं इतना था. सो आई वेंट, पूरा मैं परिक्रमा कर रही थी, पर पीछे का डोर खुला था, जो हम एग्जिट डोर जैसे होते हैं ना, जिसे हम बाहर निकलते हैं लंगर हॉल जाने के लिए, वो खुला था और एक सेवादार अंकल खड़े थे. एंड आई आस्क्ड सेवादार अंकल, आई सेड अंकल मैं अंदर जाके माथा टेक लूं? तो पहले तो हेजिटेट करे, फिर कहते हैं अच्छा आंटी आप अंदर जाओ, माथा टेकना, 1 सेकंड भी नहीं रुकना और टर्न करके आ जाना. बस आप माथा टेको, खड़े हो, टर्न करके आ जाना. आई सेड हाँ जी अंकल. आई वेंट इन, मैं पूरा अंदर भी नहीं गई, बस जस्ट 2 स्टेप्स इन. वहीं मैंने माथा टेका. आई स्टूड अप, लुक्ड, एंड गुरुजी के जो स्वरूप है उससे अमृत वर्षा हो रही थी, टोटली कवर्ड. बट आई रिमेम्बर्ड कि मैंने उनको बोला कि रुकना नहीं. आई इमीडिएटली टर्न्ड एंड आई वाज अबाउट टू गो. जस्ट देन वहां 2 अंकल थे. वन ऑफ देम केम, तेज चलते हो मेरी तरफ, एंड उन्होंने, आंटी आप अंदर कैसे आए? आई सेड अंकल मैं बड़े गुस्से से उन्होंने कहा कैसे अंदर आए? आई सेड अंकल मैं बाहर अंकल से, सेवादार अंकल से पूछ के आई हूँ. कहते हैं हो ही नहीं सकता. ऐसे नहीं अंकल मैं पूछ के आई हूँ, आगे लेके आई, नहीं तो मैं नहीं आती. नहीं आप झूठ बोल रहे हो. और उन्होंने अच्छा खासा मुझे डांट दिया. एंड आई एनीवे केम आउट, एंड मैं वापस आ रही थी. झूला जहाँ झूला है उसके पास अंकल वो खड़े थे, सेवादार अंकल. उन्होंने पूछा आंटी माथा टेक लिया? आई सेड हाँ जी माथा टेक लिया. बट वहाँ अंकल ने तो मुझे अच्छा खासा डांट दिया. एंड वो ऐसे बात हुई. तो सुनिए उन्होंने पूरी. फिर कहते हैं आंटी, एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग, एंड आई थॉट वेरी स्ट्रेंज, मैं ये बता रही हूँ आई एम फीलिंग लिटिल अपसेट, और वो स्माइल कर रहे हैं. कहते हैं आंटी सेवादार जब ऐसे होता है, जब वो बोलते हैं तब गुरुजी उनके मुंह से बोलते हैं, एंड वो डांट जो है गुरुजी उस वक्त आपके कर्म काट रहे होते हैं. बट संगत जी ये जो अनइंटेंशनली होता है, प्लीज इंटेंशनली गलत चीज मत करिए ताकि सेवादार कोई आके आपको डांटे. नो, इट डजंट वर्क दैट वे. But this is when it happens in the flow unintentionally, and then any seva comes and stops you या टोकते हैं, तो उसमें आपका भला ही होता है. अंकल जी, just 1 second. Do I have time to go on or? Please go ahead. Okay, uncle. In 2011, it so happened that I had fixed up a meeting. I had to meet a lawyer for some legal thing, and date and time was fixed, and I was trying to take the flight and come to Delhi. So I had called the travel agent कि मेरी ये book कर दो. And he said, मैम आप खुद ही आ जाइए, easy रहेगा आपका ये ना जो भी timing है, arrival departure आपका जरा, you want very specific time, so I want to reach Delhi during morning, not in the middle of the night and odd times and all that. And so I said, okay, I'll come. Very strange. That day I took the car, I took a wrong turn and I reached somewhere else. So not even a 5-minute drive from my house. It's something I've done so many times. Another time, my car stalled. Next day, third day, something happened and it would start, it would stall, it would start. Finally, I just, slow running me, it was stopping. So I just came home and I parked it. Fourth day, something else happened. By the fifth day, I was very hassled. I said, "Ye ho kya raha hai? I'm not being able to reach the travel agent." And I'm calling him and he's saying, "Ma'am, aap aa jao." Very strange. I was very hassled. And in those days, somehow I was not being able to listen to Shabad. मेरे को बैठ के मंत्र जाप भी नहीं हो रहा था. Not that I do much, but little, whatever, 2 minutes, 3-5 minute prayer, जो भी है, कुछ भी नहीं हो रहा था. I was very disturbed. And I don't know what happened to me. I just called Rama aunty. It's very strange. I don't know मेरे पास उनका नंबर कब आया, मैंने कब लिया, कब स्टोर, और उनका थॉट कैसे आया. It's still a mystery to me. But I called her. और उन्होंने 2 कॉल में पिक भी, 2 rings and she picked up. And I just told her, aunty, मेरे को दिल्ली आना है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे को दिल्ली आना है, but somehow I cannot
get in the car. मैंने बस इतना ही कहा, and first thing she tells me, आपकी भक्ति में कमी है. I तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट, I तो हिल गई एकदम. I said, ये क्या कह दिया इन्होंने? Then she says, आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया? I said, क्या आंटी? गुरुजी कह रहे हैं इत्थे उत्थे घुमन दी कोई लोड़ नहीं है, सड़कों ते घुमन दी कोई लोड़ नहीं है, चुपचाप करके बैठ जाओ, गाड़ी नु हाथ नहीं लाना. And she put down the phone. That was the end of my conversation. I so kept sitting for 10 minutes, absorbing what auntie had said. And also, when she said, Bhakti mein kami hai, I am connecting it to the fact that मैंने मंत्र जाप नहीं करा, या मैं शब्द नहीं सुन रही, and all that. And 4 days later, I suddenly felt, after bath, I put on Shabad, then I started doing mantra jap, and after that I felt, no, I should go and get my ticket. So I got in the car, I reached the travel agent, got the ticket at a good price, at the timing I wanted, everything. And next day I was in Delhi. And same day, because flight lands early morning, so after a couple of hours you freshen up. And so I thought, I'll go to the office. And the person's number also I was trying. I had just one number and it was not connecting. So I thought maybe kuch number mein kharabi hai ya kuch hai. And I had no alternate number for the jinko mere ko milna tha. So anyway, I went to the office building. I went to his cabin. As I entered, he stood up, hands folded. Mrs. Mehta, I'm so sorry, aapko wait karana pada. 10 दिन से wait कर रहे हैं. In fact, जो मैंने उनको बोलना था, I was ready to apologize and ये वो. He's telling me. I said, मैं आज ही आया हूँ, कोई emergency आ गई थी, काम पड़ गया था, मुझे बाहर जाना पड़ा. I was not out of town, और मैं आज ही आया हूँ. That instant, I understood loud and clear, जो हो रहा है, बहुत अच्छा है, और जो नहीं हो रहा, उससे भी अच्छा है. क्योंकि जब होगा, गुरु जी की मर्जी से होगा, उनके टाइम पे होगा. And I also understood what auntie was saying, आपकी तुम्हारी भक्ति में कमी है. It wasn't as I was thinking, but it meant विश्वास. Have faith. हम बड़ी जल्दी घबरा जाते ना. Have faith. This is what it was, and it came so loud and clear to me. That one big lesson I learned that day. And faith भी गुरुजी ना सबको उनके हिसाब से डालते हैं. से एक बार 12 की बात है. I was in Delhi and my son-in-law and daughter had also come. तो मेरा मन था कि मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई, और मेरा मन था, मैं ना प्रे कर रही थी गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा कुछ करना, इनमें भी फेथ डाल देना. बिकॉज इन्होंने कोई सत्संग अटेंड नहीं करा था, यूएसए में थे, और तब अभी इतने सत्संग बाहर नहीं हो रहे थे. एंड हमने लंगर खाया, दरबार वहां से झूला की तरफ से, कुछ की तरफ से आ रहे थे. सडनली आई हर्ड समबडी से, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं. So we went, और समाधि की wall पे, the wall that is facing where the main path is, where you go towards the main gate, and half of the wall that's facing Shivji. There were shadows of full light on the walls and shadows of Om, like dancing Oms. ऐसे था जैसे कि किसी ने stencil रख दी हो flood light के आगे, and वो shadows form हो रहे हैं. Beautiful darshan. And my son-in-law still talks about, okay, with the very first visit, Guruji gave darshan. And so in June 2012, हमारे घर में पहली बार गुरुजी का सत्संग करा था हमने. And we were expecting about 60 people at home, and more than 100 came. And वो भी बहुत ही very nice. The atmosphere was so charged. Guruji की presence इतनी feel हुई थी उस सत्संग में. And I had told my son
कि ये sound system की ना your responsibility, just check everything is in order. And also कि जब मंत्र जाप हो जाएगा, I mean I get up to welcome मतलब Guruji and the Sangat after me, you also get up and welcome. He said, no, I'm not getting up. I said, no, you should. Family, सब अच्छा लगता है. No. I said, okay, you can't argue with a 23-year-old. I said, fine. Now, around that time, normally evening satsangs are at 7 p.m. And those days, what we used to do is in larger gatherings, we would do the aarti before 7 p.m. Because afterwards, if everybody gets up, then it becomes a bit of a chaos, difficult to manage the pelican. So I remember at 5:30 in front of me, he checked the music system, everything. Tab CDs चलते थे, laptop पे playlist वगैरह बाद में आई थी. और उसमें the system we had was those 3 rotating CDs. So the first CD had Welcome Band and Aarti. And the second CD was from Ikumkar to Mantar Jap. And the third CD had that Om Namah Shivaya that's played during Langar and some other Shabad, and then followed by a couple of Punjabi folk songs. So that was the way it was arranged. And so first CD chali, jab sab baith gaye to second CD chalni thi with Ikumkar, and wo CD chali nahi. So my son ejected it. And I saw that it is ejected, and it took me a while to realize कि CD तो बाहर है, but Ikumkar play हो रहा है. Now, after Mantra Jap, when I got up and I welcomed everybody, before I could sit down, my son had got up. He got up, thanked everyone, then especially thanked Guruji. And then he narrated that he had ejected the CD out, thinking he will push it in. Kai bar atak gayi hogi, so he'll push it in and then start playing. But while it was out, Ikumkar started. And after that, the first Shabad. And then my son, he says, because at that point I had prayed to Guruji. Ki Guruji, please, Ikumkar, please, chal pade ye CD. And otherwise my mother's going to kill me. Because sound system is so integral part of the whole satsang. And wo chal pada, and he says, and I realized CD bahar hai, aur ye Ikumkar ho gaya, Shabad chal pada. Then he's in a dilemma. He said, ab main kya karu? Isko andar push karta hu, to wo disruption ho jayegi. He said, but nonetheless, I said, Jai Guruji, and I pushed it in. And without disruption, the CD continued playing. So, and then he said, of course, there's no scientific explanation, anything, but then he got up to thank Guruji, and the seeds of faith were sown in him at that point of time. Because see, बच्चे बैठ जाते हैं आपके साथ सत्संग पे और ये, but believe करते हैं, actual believers हैं, faith है, that's a different thing. That's an individual thing. Parents के कहने पे बैठ गए या for sibling, peer pressure or any such reason. But you see, that faith is a different journey altogether. And in that same year in July, he suddenly tells me in July, my uncle's birthday, he says, Mama, I'm booking tickets. We are going to Delhi. I said, to Bade Mandir. And just for 2 days, we are going, and next day we are coming. I said, Acha. Okay. And I think he realized that's the only place I'll get peace of mind. And I was a bit stressed out around that time. It's not easy to handle all aspects of life, and where we were staying, a bit of living like a fish in a glass bowl kind of, so pressure, handling all aspects of life, and handling it alone sometimes can be challenging. So we went, and from airport, I changed my clothes at the airport. Straight we went to Bade Mandir. For 2 days, you have a cabin bag and not much luggage as such. We went straight to Bade Mandir. The car was there with us for the whole day. Wahan gaye, and immediately it was a satsang day. They asked me to do seva, full seva.
at near the Jhula. Another auntie was there. So and later I saw later my son was doing झाड़ू sweep वो कुटिया के बाहर का सारा वो area पूरा साफ कर रहा था, and I realized that that's a very special seva that he's got. And मैं भी फिर भी ये फूलों की सब कर रही थी, and later I saw I think Singla uncle थे और एक और uncle थे, वो उसको सत्संग सुना रहे थे. And then we were asked to have lunch, Langar Prasad. So lunch pe bhi liya, and then we came, and evening we attended the Satsang. So really Shukrana Guruji for giving me this seva in Bade Mandir, both of us, my son and me. And we stayed we were there for a day, and that next day night we took the flight back. So this is Guruji. Takes care of you every inch of the way and makes even an emotional day a very happy day, a very blessed day. And you know, Guruji लीला रचते हैं. Actually उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो ब्लेस करने के लिए किसी को बीच में you know part of that लीला बना देते हैं. That's his way of blessing, or he creates a leela. When he wants to do something, वो incident को create करते हैं, and किसी को वैसे ही part of that बना देंगे, और हमें ही अपनी बड़ी importance लेते फिरते. But it's like actually Guruji doesn't need any one of us. He can bless anyone he wants to, do whatever however he wants to. But he does it because he is very gracious, very kind, very loving, and he does certain things to develop faith in people, those who've just connected, or to deepen our faith. In April 2013, I was going to USA, my daughter's delivery, my first grandchild. So, and जाने से पहले मैंने माथा टेका. I went out, and then I came back in again माथा टेका घर में ही, and I took one locket, and ऐसे पकड़ा, I went. By the time I reached the airport, and I realized मैं locket क्यों लाई? I don't know why I picked up a locket. और locket ले लिया तो फिर कोई पोटली उठानी थी. Now how am I to keep the locket? You can't just keep like this anywhere. Guruji का स्वरूप है. So my handbag जो था, उस bag मतलब purse, उसमें the inner zip छोटा जो होता है उसको फिर खाली करा, साफ करा, फिर clean tissue में अच्छे से ये locket wrap करके उसमें रखा. I'm wondering, I don't know why I brought it. I've never done this before. I go every year. मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं करा, but this time, anyway, I went there, and beginning May, my friend, I have a very close friend in this is in Atlanta. She called me. She said, "Come over." I said, "Yeah, okay, maybe for tea, because I don't know, you know, the due date is very close." So मैं अपने आप को ना, I didn't want to tie myself down कि मैं commit myself कि मैं आऊँगी for spend a day or nothing of that sort, or even for lunch. So I'll come for tea so that I can quickly go if required. She said fine. और जब मैं गई तो उसने एक और friend को बुलाया हुआ था, उसकी very close friend, and we got around to talking, and it was, I remember, a Monday. So I started doing Satsang of Guruji, and as I was leaving, this friend, my friend's friend Indira, asked my friend कि तुम कल आओगी. Apparently Indira's daughter had a rare form of some blood disorder, almost like cancer, and for that, from Atlanta, they used to fly down to Seattle every 3 months and stay there for 5 days for the daughter's treatment. She was just an 8-9-year-old girl. उसके लिए करते थे. And my friend used to go to their house every Tuesday to play with the little girl, to give her some relief. She and another friend would go on another day. So twice a week, somebody was going. And she just asked my friend, "Are you kal?" So she said, "Yeah, I'm coming."
And my friend turns to me and says, why don't you come? I said, oh, I'll see. And immediately, I don't know, spontaneously, I asked Indira, I said, do you mind if I give Guruji's locket to your daughter? कहती वो metal तो नहीं पहन सकेगी, in her, you're not allowed. I said, no problem, मोली पे डाल लेगी, like I have done. कहती नहीं, आप ऐसे करना, उसके माथे पे ऐसे लगा के bless करके मंदिर में रख देना. I said, okay, fine, good enough, I'll do that. So next day I went, I did that, and Mandir mein rakha, and this little girl tells me, okay, and she said, namaste. I said, nahi beta, don't say namaste, say Jai Guruji. Kehti, okay, Jai Guruji. Kehti, okay, auntie, every day I'll come and do that. I said, very good. Kehti, every morning I'll do that. I said, okay, very good. So that happened. And when I came back, I was back home, I'd returned. In October, I get a call from my friend saying, Sonia, your Guruji has worked miracles. I said, what happened? She said they went in August to Seattle and there's nothing, she's fine. There's absolutely nothing. And doctors are wondering that, did she ever have that problem? So she's back, in September, the schools have opened, she's joined school, she's just a grade behind, that's it. And she's perfectly fine. And my friend said, Jai Guruji. And then I also said, Jai Guruji. And I believe the locket's still in Indira's Mandir and kept with a lot of reverence. And I won't say they are devotees, but they definitely have a lot of reverence for Guruji. During that trip, I was one day sitting on the deck, sometime, this must be like June or something. I mean, the baby was about 2-3 weeks old. My daughter and son-in-law were busy with the baby. I was sitting alone in the deck, and really I didn't have much role to play. Children like to do everything themselves. So except for seeing that the house is running and, cooking, other than that, not much. So I was just sitting and just thinking, maybe one of those, when you get some low, you are at a low ebb, so फिर वो thoughts भी जरा से ऐसे हो जाते हैं, thinking के if uncle was there, we would be doing so much and all that. And then also thinking ke I'm sitting here and these 1.5 months, I missed so many satsangs, I've not attended any. And also right now, I can't make call to Delhi or in the Middle East because raat hogi wahan pe, to can't disturb people like this. And just then my phone rang. And the person, first thing she says, the lady at the other end says, Sonia auntie. I said, Hanji. And she says, Jai Guruji. So I am very happy. I said, Jai Guruji. I said, Sangat ka phone aa gaya, very good. And I'm just thinking about Guruji and making phone calls, or this happens. And she says, auntie, I'm staying here in some other place and I want to do satsang. So mujhe aapse puchna tha. So I asked her one thing. I said, who told you about me? So I just wanted to know common link kya hai. And she says, it's very strange. She says, inko jude hue, she and her parents, because during her last visit to India, about 1.5 years back, they had been to Bade Mandir. So she and her parents bhi the saath mein, to wo bhi Guruji ko mante hain aur satsang jate hain. And wo Jalandhar gaye the, and at some point they met Rama auntie, and very strange this is, it just dots don't connect in a way, or connect bhi hote hain because Guruji to kuch bhi kar sakte. So auntie said ki ye number hai Satsang ka, Sangat ka, wo mera naam leke, Sonia auntie, which will be going to USA. तो आपकी अपनी बेटी को बोलो कि वो उसको फोन करके पूछ ले सत्संग कैसे करते हैं. Very strange. Anyway, the outcome of this whole thing was we spoke for 40 minutes. Outcome of it was as if somebody had given me an injection of positivity, joy, and sense of completeness, that little wee bit incomplete that I was feeling.
So this is our Guruji, our very loving, caring, absolutely, कहते हैं ना हाथों पे उठाने वाले गुरुजी, ये हैं हमारे. And that year, towards the end of that year, suddenly one day, I was just wearing one of those loose neck top. So my son pointed out कि आपने tattoo कराना है तो आप proper कराओ, ये आप अपने उस पे shoulder पे मतलब shoulder blade पे लिख के क्यों घूम रहे हो? I said क्या red pen से? I said क्या लिख के? He said आपने ओम क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे? I said मैंने थोड़ा, I mean I won't write om like that. I mean, so I went and looked in the mirror and it was there, and suddenly, and it stayed for 5 days. It was a beautiful blessing by Guruji. I'll always say never question for why, when, what's the meaning of it, what's the purpose of it. No, just go with the flow. Guruji gives a blessing, accept it, be extremely grateful for it, and just go with the flow. And Guruji, sometimes does a lot of things, as I said, to strengthen you for what's to come later. And in that, in May 2014, I'd gone to Guruji, had called me to Dugri. It's a big satsang. I shall narrate it another time whenever Guruji gives me agya. Sangaji, I'll only say one thing: through all the ups and downs of life, hold on to these 3 shabads. In fact, one of them played today. I was very happy to hear that. Satguru pyara mere naal hai, sangat te karaj aap khaloya, jo mange thakur soi soi deve. Ek khara sona hai. Absolutely 1,000 times true. And all I'll say, कोई भी अरदास आपकी गुरुजी के आगे खाली नहीं जाती, सच्चे मन से करी हुई अरदास. Guruji is always there with everybody. It's not with me, it's with every sangat. Will have innumerable experiences with Guruji because he blesses everyone. He's very loving, very kind, very gracious, extremely merciful, and always with you, always with each and every sangat. He loves his sangat. He just wants us to follow simple rules: no mobiles, no talking, no ninda. Take your blessings home directly. Come, don't make any other plan once you're going to a satsang ke vaya jayenge, ye kar le, wo kar le, fir jayenge satsang. No, it has to be a top priority. Do mantra jap and these 3 shabad. Shukrana Sangat ji, Shukrana Uncle, Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual satsang sharing platform. Above all, Shukrana to Guruji. Anantam Shukrana. Jai Guruji. Jai Guruji, Aunty. Anantam Shukrana for the beautiful satsang. Thank you so much, and Shukrana Guruji ka that we all were able to hear such beautiful blessings. Thank you. जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनिया आंटी. Guru Parivar witness a divine blissful satsang from your side today, and we hope to invite you again very soon, Aunty. Jai Guruji. Whenever you say, Uncle. Whenever you say. Whenever Guruji ki aagya jaise hogi. Yes. Guruji will call you soon, Aunty. Thank you. Thank you. Over to you, 894 Shukrana Bhajan. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी.
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਇਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।